Hello and welcome to the first episode of We Can Learn with Afsha. So in this particular episode, we'll learn about the 5 simplest ways to increase your confidence in public. Now we have had wonderful response to our first video, that is the art of communication, and I'm sure you all must be waiting for this one. So without wasting further time, let's just directly delve into the video. So before discussing these 5 simple steps, let's just directly think about confidence. What we think is confidence. Confidence होता क्या है? कहाँ से आता है? कौन सी term है confidence? So I believe that confidence is just another heavy term for self motivation. ठीक है? तो आप confidence बोल लीजिए, आप बोल लीजिए self motivation, दोनों एक ही बात है. You just have to motivate yourself. That is what confidence is. The first step is itself motivation. Motivation is something that you have to practice. You have to keep on practicing continuously. उसमें भी आप ये मान लीजिए कि आप कर सकते हैं. The first thing you have to tell yourself is you can do it. आप कर सकते हैं और आप कर लोगे. You can and you will, right? Keep on saying this to yourself. When you say these positive words, when you say this, positive affirmation to yourself, your body, your mind, it starts to function that way. That ओके मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी. ओके सो आप खुद से मोटिवेट होना स्टार्ट कर देते हो. नाउ देयर वाज दिस चाइनीज सेइंग दैट आई हैव रेड समवेयर. इट वाज समथिंग लाइक देयर आर वॉरियर्स इनसाइड यू. ओके एंड यू हैव टू कीप ऑन सेइंग पॉजिटिव थिंग्स टू दीज वॉरियर्स बिकॉज इफ यू वोंट दे विल डाई डाउन. सो आपके अंदर जो वॉरियर्स हैं, जो सिपाही हैं, जो योद्धा हैं, अगर वो ही मर जाएंगे, so how will you fight? How will you fight in the world? Okay. अब आप कैसे मोटिवेट करोगे? अभी बहुत ही रिसेंटली एक रैप था जो वायरल हुआ था and that was the title was मैं नहीं तो कौन बे. I think I am so inspired by this particular line that मैंने वो लिख जगह जगह मैंने अपने वो बोर्ड पे लिख लिया, अपने राइटिंग डेस्क पे उन्होंने लिख लिया है. That was मैं नहीं तो कौन बे. So if not me then who? So खुद को ये बोलते रहो that I am the most perfect person for this and this position, for this and this job, for this and this thing that you are working for. So keep yourself engaged with this particular affirmation that you are the boss, you are the perfect person for this and this activity. Motivate yourself. Okay, so मैं नहीं तो कौन बे, if not me then who will? So the second step here is speaking. Speak as much as you can. So I think this is one of the strategies that I keep on telling my students to practice continuously. What happens is when you speak and you speak good, basically when you have a good hold over your language, your tone, or your voice modulation, you automatically let the conversation flow with the other person. So there you become the most confident person in a conversation because you know what to speak and how to speak. So speak, but in a good way. So the third step here is to educate yourself on different topics of your choice maybe. Knowledge is very important. Make yourself that much of a knowledgeable person so that अगर कोई उससे आके बात करने की कोशिश करता है तो उसको भी लगता है कि this person has some sort of social standing, that the person can be part of a society because person has knowledge. So maybe it could be your let's say the topic of your choice, your favorite sport, your favorite Bollywood industry, fashion industry, geopolitical issues. वो कोई भी टॉपिक हो सकते हैं, बट आपको एक रेगुलर नॉलेज लेना जरूरी है. And the fourth step here is to look back. Looking back at a list of things that you have achieved in life. ये मैं खुद भी करती हूँ. ठीक है, आपको एक लिस्ट बनानी है. लिस्ट में आपको क्या बनाना है कि लाइफ में अभी तक जो भी आपको याद है, what are your topmost moment in life where you felt like you have achieved something, you have done something that you kept on feeling like you will not be able to do. ठीक है, सो कुछ इम्पॉसिबल टारगेट जो आपने अचीव किया हो उसकी लिस्ट आप बना लो. सो कीप ऑन लुकिंग एट समथिंग दैट कीप्स यू गोइंग. ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका आर्ट वर्क हो सकता है, वो आपकी राइटिंग हो सकती है, दे कैन बी द मोटिवेशन लेटर समबडी हैज रिटन टू यू. तो वो आपके पास होना चाहिए. समथिंग शुड बी देयर टू कीप यू गोइंग. The last step, and which is very important, is to set smaller goals.
स्मॉलर गोल्स का मतलब यहाँ पे है कि आप कुछ लार्जर देन लाइफ मत सोचिए, बट आप ये सोचिए कि दैट in 3 days I will try to do something, which it could be reading a particular topic, it could be anything, but it's just that you have to finish that activity in the in the particular amount of time you are keeping for that activity. So you have to be active here. So जब ये टारगेट आप सेट करते हो, आपकी हैबिट बन जाती है कि आपको इतने टाइम में ये चीज़ करना ही करना है, और जब ये टारगेट आप अचीव करते हो ना, आपके अंदर खुद एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आता है. यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट, यू स्टार्ट फीलिंग दैट यू आर वेरी मच केपेबल ऑफ डूइंग एनीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ. सो इफ नॉट यू देन हु विल, राइट? इफ नॉट यू, अगर आप नहीं तो कौन, राइट? सो आई होप यू ऑल like these 5 simple steps. These are the steps that I also follow, and I also suggest other people to follow. I'll see you very soon in another episode of We Can Learn with Afsha, क्योंकि हम कर सकते हैं.